Let me be honest for a second. If you're trying to learn coding by watching hours of tutorials or saving playlists जो कभी खत्म नहीं होता, or thinking you need a paid course before you even start, yes, you are doing it wrong. And नहीं आपकी गलती नहीं है. So in this video, मैं आपको बताऊंगा कि how to start coding in 2026 from scratch. चलो, let's get in. The first and most important step ये है कि you choose a programming language based on a career path. यही step पे most of the beginners get confused. Like different fields use different languages. For example, data analysis, AI and machine learning में mostly Python use होता है. And web development may we use JavaScript along with HTML and CSS. Whereas app development might use Java or Swift. Now I know you are completely confused and समझ नहीं आ रहा which field to select. I would say go with Python or Java. These two languages are very versatile, beginner friendly and industry में बहुत use होता है. Python is simple and very powerful, while Java builds strong fundamentals and object oriented thinking. Either of them is a safe starting point in 2026. Once I've selected my language, I would not jump into months long courses. Instead, I would stick to a proper roadmap and stay consistent. Most of the people might be wondering that एक साथ दो languages side by side सीख सकते हैं क्या? And the answer is yes. You can learn multiple languages together, but आपका basics बहुत strong होना चाहिए. Multiple languages सीखना वैसे difficult तो नहीं है. Like imagine Hindi and English. दोनों में alphabets are different, but the content will be the same. ऐसे programming languages में भी the concepts will be the same, but उसका syntax अलग होगा. For example, loops जो है C++ and Python दोनों में सेम काम करता है, but the syntax are very different. If you are a complete beginner, I would say start with C++ or Java, which will be useful while doing DSA. अगर data science field में जाना है तो start with Python. अगर आप भी एक कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज में भी लैंग्वेजेस सिखाते होंगे. आई वुड से मास्टर दैट लैंग्वेजेस फर्स्ट, जिससे आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा एंड पॉइंटर भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा. Now the next question will be how much time should we give for a particular language? अगर आप एक बिगिनर हो एंड कुछ रश नहीं है तो पूरा लैंग्वेज कंप्लीट कर सकते हो. सपोज इफ यू हैव एन इंटरव्यू कमिंग अप इन फ्यू मंथ्स, देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. सपोज डेटा साइंस का जॉब है तो पूरा पाइथन करने का ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड डू द बेसिक्स एंड जंप इनटू द पार्ट्स विच आर यूज्ड इन डेटा साइंस. बट दिस इज नॉट अ गुड वे. अगर टाइम नहीं है तो ही चूज़ करना ये स्टेप. कौन सा भी लैंग्वेज चूज करो, बट फॉर लर्निंग अ लैपटॉप इज मस्ट. पेन एंड पेपर से कोडिंग नहीं होता. यू हैव टू वर्क विद कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट शुड वी लर्न एज बेसिक्स. कौन सा भी लैंग्वेज चूज कर लो, उसमें एज अ बेसिक्स यू शुड लर्न हाउ टू वर्क विद वेरिएबल्स एंड प्रिंट द आउटपुट, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर्स एंड फंक्शंस. फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जावा में वी कॉल इट एज मेथड्स. I want to share a very important point with you all. Don't get nervous or anxious over peer pressure कि उसको ये आता है, उसको इतना languages आता है, उसका skills बहुत अच्छा है. Rather build a team of people with whom you can share your thoughts and grow together. Like you can freely ask them कि अरे ये कैसा किया तुमने, please teach me. So you have to feel free with your group, not like you always get nervous because of them. तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.